Assalamu alaikum. My name is Yasmeena. The topic that I'm going to talk on today is the art of successful marriage. And I would say that there are numerous variables that affect a marriage, as a human being is very complex emotionally. Though they may seem similar on the surface level, no two people are the same. कोई दो बंदे सेम नहीं होते. एंड ये दो बंदों को मिलाना एक बहुत ही डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स गेम है. मैंने बोला गेम है? मैरिज इज अ गेम, मैरिज इज अ गैम्बल, मैरिज इज एन आर्ट. हम ये सब सुनते हैं, बट मे बी मैरिज इज रियली मोर ऑफ अ साइंस. कई रिसर्च हो चुके हैं इस टॉपिक पे, बिकॉज द रेट ऑफ डिवोर्स इज द हाइस्ट इन नॉर्थ अमेरिका. तो बहुत सारे लोगों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने इस टॉपिक को स्टडी किया. इन्होंने कई वेरिएबल्स, मतलब फैक्टर्स जो मैरिज को अफेक्ट करते हैं, उनको स्टडी किया, जो रिलेशनशिप में एग्जिस्ट होते हैं. इनको आइडेंटिफाई किया और बताया कि क्या होता है जो मैरिजेस को सक्सेसफुल बनाता है. तो इन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया आफ्टर दिस रिसर्च. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू नो व्हाट दिस फॉर्मूला इज. एक ऑर्गेनाइजेशन ने करीबन 400 या 500 फैमिलीज को स्टडी किया, कपल्स विच आर अबव द एज ऑफ 65, और इनके मैरिजेस हैव लास्टेड मोर देन 30 इयर्स. अब ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी अ मैजिक फॉर्मूला. तो मैं आपके साथ ये मैजिक फॉर्मूला आज शेयर करने वाली हूँ. ये रिसर्च ने बताया कि देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर मैरिज: कम्युनिकेशन, नॉलेज एंड कमिटमेंट. Communication is the key to making any relationship last. I'm sure most of you have heard about this. इनके सर्वे ने ये बताया कि अगर कभी भी प्रॉब्लम होता है अपनी मैरिज में, आप कम्युनिकेट करें. और जब आप कम्युनिकेट करते हो तो वो जो हम एक दूसरे पे ब्लेम डालते हैं मैरिज के बारे में, दैट इज डिसॉल्व्ड. एंड गुड कम्युनिकेशन आपको कई तकलीफों से दूर ले जाता है. आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपका जो मैरिज में टर्मोइल होता है, इसको स्लो डाउन कर देता है एंड इट ड्राइव्स दीज ट्रबल्स अवे. नेचुरली जब आपके ट्रबल्स निकल जाते हैं आपके रिलेशनशिप के साथ, तो आपका रिलेशनशिप भी अपने स्पाउस के साथ सही हो जाता है. मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने ये ट्राई कर चुकी हूँ. जब भी मेरे और मेरे स्पाउस के साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फाइट्स होते हैं, फर्स्ट थिंग टू डू इज शट योर माउथ. ईदर यू शट योर माउथ और ही शट्स हिज माउथ. वंस बोथ ऑफ यू हैव कूल्ड डाउन, sit together, and that is what we did. We sat together, and alhamdulillah, we are now married more than 25 years. And when you talk to each other, this really helps resolve the issues. So remember, it is always said communication is the key. Second, knowledge. Now, आप बोलेंगे इसमें knowledge कैसे आती है? कई बार मैं डिस्कशन जब करती हूँ तो मैं नॉन मुस्लिम एक्सपीरियंसेस एंड मुस्लिम एक्सपीरियंसेस को जुड़ा देती हूँ. नाउ इनके हिसाब से नॉलेज वो होती है कि आप जिससे शादी करने वाले हो उसके बारे में आपको नॉलेज प्रोक्योर करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन दैट यू आर गोइंग टू मैरी सो दैट योर मैरिज इज सक्सेसफुल. फॉर एग्जाम्पल, आप उनके बारे में, उनकी लाइफ क्या है, उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट लोग कौन है, वो मैरिज के बाद क्या चाहते हैं, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनके हिसाब से कंपैटिबिलिटी फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब समझना बिफोर मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इनके हिसाब से व्हेन यू आर लुकिंग, नॉन मुस्लिम्स के हिसाब से व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज, आपको मैरी करने से पहले अपने पार्टनर्स के साथ ये एक्सपीरियंसेस शेयर करनी पड़ती है. बट वी मुस्लिम्स do not believe that. We Muslims believe that आप जो ये फैक्टर्स समझना चाहते हो, ये आफ्टर मैरिज समझो. बिकॉज अगर आप ये सब बिफोर मैरिज समझ जाएंगे तो why do you need to marry that person? Well, after marriage, it takes you so many years to understand this person. So if you want, alhamdulillah, the best way to know your partner is, of course, the knowledge of the person. Get to understand the person. But हम मुसलमानों में, we Muslims say that you have to get to know this person after marriage, and inshallah this will help you make your marriages successful. It's said that marriage is very difficult, and to make this easier, it is important to marry somebody with the same interest, the same background and the same orientation. ये general belief है. This is the general belief that the population has got. But कई बार मैंने देखा है the most opposites attract. And alhamdulillah, their marriages have also been successful. The third and the most important point is commitment. It is no secret that marriages are going through divorces.
एंड ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो चुका है कम्युनिटी में कि डिवोर्सेस हो रहा है, डिवोर्सेस हो रहा है, डिवोर्सेस हो रहा है, और हम ये सब चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप है should be successful, and trust me, this is all in the state of mind. Because कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैरिजेस तो लॉन्ग टर्म नहीं है, अगर हम चाहते हैं तो हम डिवोर्स ले सकते हैं, और इसमें सब्र निकल जाता, there is no patience. कई बार ये बिलीव होता है कि जब तक पैशन है मैरिज में, आपकी मैरिज लास्ट होगी, उसके बाद मैरिजेस टूट जाएगी। बट जिनकी मैरिजेस सक्सेसफुली हुई है, आप उनसे बात करें, आपको रियलाइज होगा जो एल्डर्स आर सक्सेसफुल इन देयर मैरिज, दे से दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट कमिटमेंट इन दिस. Sometimes you may have a break or a fight for a short period of time. This is only short term. But remember, you are a couple and you have to have a sabr. You have to have a discipline in your marriage. Now let me give you an example. जैसा कि फॉर एग्जाम्पल एक एथलीट होता है और म्यूजिशियन होता है, वो काफ़ी आवर्स डालता है अपनी प्रैक्टिस में. एक एथलीट रोज रन करेगा या रोज प्रैक्टिस करेगा, एक म्यूजिशियन अपने स्किल को डेवलप करने के लिए रोज प्रैक्टिस करेगा. लेकिन हम अपने मैरिजेस पे तवज्जो ही नहीं देते. वी डू नॉट focus on our marriages and we do not sacrifice. We look at it as a very short-term commitment. And इसमें क्या होता है कि there is no patience or there is no sabr. And that's the reason that more and more marriages are going through divorce. आप अपने elders से बात कर लें. There has never been a perfect marriage. There has never ever been a perfect partner. But what you can do is, at the end of the day, realize a marriage, and this research has proved, through the same survey, research was done, and it was found that every elder said at the end of their life, like after 30 or 40 years marriage, it was worth it. So my dear brothers and sisters, अगर आप सोचते हो कि ये जो मैरिज का रिलेशनशिप, this is specially a message to the younger generation. After all these years, you will realize that this experience of marriage or the relationship you have had with your spouse is really worth it. Now, ये हो गया दुनिया की तरफ से. एक मुसलमान couple will be a little different. There have been a lot of discussions in the Muslim world. जैसा कि for example, the ulamas, the Muslim organization have different topics, discuss this topic, how to get rid of marital conflict among Muslims or among couples. Now, before you complain about your spouse, how perfect are you? Because I have seen when couples break up, जब couples break करते हैं, वो हमेशा दूसरी party, that is the other family, they blame the other family and they blame the other boy or the other girl. But how good have you been to your marriage? Have you followed the basics of your marriage? I generally ask the couple or advise the couple, जब आप अपनी marriage के लिए spouse ढूंढ रहे हो, तो आप उनका दीन and character देखें. But people focus on, has he got a good job? How much money is he making? Are these the factors that we should look for in a marriage? In fact, when there is a nikah happening and the imam talks about marriage, he generally tells you to focus on the Islamic aspect. Pray together. How many spouses actually pray together? We focus on small things. Like ये खाना अच्छा नहीं बनाती, हमारे बीच में प्यार नहीं है, बिकॉज ये बच्चों का ख्याल नहीं रखती, घर गंदा रखती. ये सब छोटे छोटे ट्रिवियल फैक्टर्स है विच यू विल ओवरकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हमारे को कुरान में एडवाइस दिया गया है फॉर मुस्लिम्स कि यू आर गारमेंट्स फॉर ईच अदर. आप एक दूसरे के गारमेंट्स हो. गारमेंट्स मतलब हम एक दूसरे को कवर करते हैं, हम एक दूसरे की डीमेरिट्स या जो नुक्स है वो कवर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को स्पिरिचुअली सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को दीन की तरफ इनवाइट करते हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, इफ यू फोकस on the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, all this will be nothing. Couples को हमेशा बताया गया है, and this is my last quote. My quote is, the couples who pray together and play together, Allah will inshallah make your marriages successful and you will stay together. So the quote that I end with is, a couple who prays together and plays together will stay together. I hope you have benefited from my session today. Assalamu alaikum and have a blessed day.